सो यस, आज हम बात करेंगे डबल रोल्स और मल्टीपल रोल्स के. सो ओए लकी लकी ओए, दैट फिल्म यूज दिस टेक्निक ऑफ मल्टीपल रोल और डबल रोल वेरी वेरी इंटेलिजेंटली आई गेस. इसमें दिवाकर बैनर्जी का मुझे लगा कि द एंटायर फिल्म यू सी फ्रॉम लकीज पर्सपेक्टिव. दैट्स व्हाई अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने फिर से परेश रावल देख लिया. अरे ये फिर से क्यों आ गया? अरे ये तो उसके पापा थे ना, ये फिर ये ऐसे अलग सेटअप में क्यों आए? आपको आप यू नेवर क्वेश्चन दैट. When we're talking about doppelgangers, there is an interesting film, Chhuk Gaya Asman. It took it to another level because the spirit enters the body of the bad guy and turns him into a good guy, you know? But there is another film which I would like to state where it is the same character being played by two actors. कर्ज है क्या? कर्ज भी है और ये वादा रहा भी है. हाँ. और कर्ज भी है, एक कर्ज भी है विद लॉट ऑफ हाँ, वो नहीं, उसकी नहीं बात करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे सौरभ. हम सुभाष घाई वाली कर्ज की बात करेंगे. Hello everyone and welcome back to the next episode of Dime a Dozen Films podcast. This is a totally independent, non-sponsored podcast. So if you like cinema and if you like what you hear, do comment and share with your friends and groups on social media. You can also reach out to us on our social media handles, which are published with the podcast every time. You can also email us on the email ID mentioned. Thank you for your support and feedback so far. And a huge shout out to our regular listeners for their encouragement. You're listening to Dime a Dozen Films podcast. Hello Ashuji, hello Saurabh, कैसे हैं आप? नमस्कार, सलाम, आदाब सब सुनने वालों को. मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सारों ने अपना वक्त अच्छी तरीके से गुजारा, खास करके हमारे एपिसोड्स को सुन करके. और हम कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड को भी सुनने लायक तो बनाएं और मजेदार बनाएं. बिल्कुल यही आशा है. हर पॉडकास्ट में यही उम्मीद रखते हैं हम. और सौरभ, आपका कैसा दिन गया? हाय हाय आशु जी, हाय डल्ली जी. मेरा दिन तो बढ़िया गया, सब चंगा सी. सब चंगा सी. चलो अच्छा है, वेरी गुड. मतलब यू नो इस किस्म की जो बात है, मतलब बैंगलोर में रहने वाला सौरभ नायर जो बेसिकली मलयाली है, पंजाबी में बात करता है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको भी मलयालम में कुछ इसका ग्रीटिंग ढूंढ करके रखना पड़ेगा ताकि हम लोग सौरभ को टक्कर दे सके. क्या लगता है नलिनी जी? नमस्कारम आशु जी एंड नलिनी जी. बिल्कुल नमस्कारम कैसे? नमस्कारम. हाँ चलो अच्छा है. नमस्कारम. Next time onwards, our greetings will have namaskaram also. Even now, namaskaram to everybody. हाँ, नमस्कारम सबको और सारे लिसनर्स को बहुत बहुत प्यार और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. रियली थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, योर फीडबैक. इट मीन्स अ लॉट टू अस. और सौरभ, मलयालम में मुझे एक लफ्ज आता है, अब उसकी प्रोनाउंसिएशन में कैसे करूंगी वो नहीं पता, बट यू कैन जज. इट्स व्हाट आई यूज्ड टू हियर अ लॉट फ्रॉम माय मल्लू फ्रेंड्स. मोले. मोले मींस बेटी. and Javai Raja, Mappalam. The Maple, that is Tamil. Oh, okay. Sorry. So Marumagan is Malayalam. What is Malayalam? Say it again. Marumagan. Oh, okay. Marumagan. And Mole is Beti. And Beta kya? Mone. Hello, Mone, Saurabh. I think Nalini ji was setting up a trap slowly, and Saurabh just walked into it. Well done, Nalini ji. Well played, I must say that. मोने, अब आप ही श्री गणेश कीजिए. आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? What is our episode going to be about? Over to you. आज हम बात करेंगे डबल ट्रबल या फिर बोल सकते हैं कि जुड़वा तुड़वा. मतलब बेसिकली हम बात करेंगे डबल रोल्स हमारे हिंदी फिल्मों में या मल्टीपल रोल्स जो एक्टर्स ने निभाए, उसके बारे में बात करेंगे. सम ऑफ आवर फेवरेट्स एंड आशु जी विल आल्सो टॉक अबाउट सम टेक्निकल थिंग्स अबाउट हाउ in earlier days or now filmmakers they do double roles, how they shoot it,
कैसे करते हैं वो, एब्सोल्युटली। इसके बारे में भी इंटरेस्टिंग चीज हम सुनेंगे आज। सो यस, आज हम बात करेंगे डबल रोल्स और मल्टीपल रोल्स के। सो नलिनी जी, ओवर टू यू। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड। या मी टू। पर मैं आशु जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि आपके कोई फेवरेट या नॉट सो फेवरेट, आप किस फिल्म या किस एक्टर के बारे में पहले बात करना चाहते हैं? मैं बताऊं, मुझे समहाउ डबल रोल्स ने बहुत फैसिनेट किया है। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे वो जुड़वा का जो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने शायद सबसे पहले ही डबल रोल फिल्म देखी होगी, उसका नाम था राम और श्याम। और राम और श्याम में मुझे वो आइडिया ही बड़ा अच्छा लगा कि एक बहुत सिंपलटन सा है, और मार खाता है प्राण से, और प्राण और उसकी फैमिली जो है, आई थिंक मनोरमा थी ना शायद उसमें, आई डोंट रिमेम्बर, जो बुआ या कोई बनी होगी, बट मतलब जिस तरीके से ओवर इम्पोज करते हैं दिलीप साहब के ऊपर, and then switch and you have the street smart Dilip Kumar coming in who teaches the other people a lesson. तो इट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज मुझे लगता है खास करके ऑडियंसेस को ना ये बड़ा अच्छा लगता था कि आप ऑडियंसेस को ये दिखाएं कि ये देखो किस तरीके का अंडरडॉग है, and the emotion of the audience is combined with this underdog. And when the other one comes, when the switch happens, and when he starts taking over, people really enjoy the idea of them getting beat up. जो रिपीट हुआ फिर से सीता और गीता में, जो अगेन आई इंजॉय थरली, मुझे बड़ा मजा आया था वो फिल्म देख करके, विच अगेन रिपीटेड इन चालबाज, एंड अगेन आई एंजॉयड इट। तो मतलब आप ये सोचिए कि डबल रोल्स का फील, इवन आमने सामने, जो खैर उसमें तो ये भाइयों का चक्कर नहीं था, आमने सामने में तो एक देयर वाज अ डॉन हु वाज लुकिंग फॉर अ लुक अलाइक, जिसके जिसके ऊपर इवेंचुअली वो सारी चीजें डाल सकते हैं, बट फिर भी वन नेगेटिव एंड वन सिंपलटन कैरेक्टर, बहुत क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स बीइंग एसेड बाय द सेम पर्सन, एंड हाउ दीज टू characters have their own sensibilities in characterization, और किस तरीके से सेम एक्टर ने उसके बीच में इस तरीके की डिफरेंसेस लाए जो ऑडियंसेस को देखते ही समझ में आया। अब मैं तो डबल रोल्स के ऊपर शुरू हो जाऊंगा, मेरे मेरे हिसाब से, ऑल दो मुझे लगता है मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो है वो अंगूर है, दो दूनी चार और अंगूर। आई रियली रियली एंजॉयड दोज टू फिल्म्स, and I'm hoping I've not stolen the thunder by from the two of y'all, where even y'all had the same likes and dislikes. आशु जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर स्टोलिंग द थंडर, तो आप ये गाना गा सकते हैं, प्रीतम आन मिलो। आन मिलो। पता है आशु जी, आपने अभी कहा स्टीलिंग द थंडर। Of course, we'll have a lot of common films which we like, but listeners को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वजह से हमारी पॉडकास्ट इतनी ऑर्गेनिक है। हम कोई स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट नहीं करते। वी जस्ट कम हियर एंड वी चैट एंड देन इट गोज इन अ फ्लो, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। And I didn't know which films you were going to pick first, and I have no idea what Saurabh is going to talk about. And so that is nice for us to listen to as well at that point in time. So over to you, Saurabh. मैंने लगता है मेरे पहले आने का फायदा उठा लिया। मैं तो और फिल्मों का लिस्ट ले सकता था, और पता नहीं आप लोग फिर डब फाउंडेड होते, बट मुझे मालूम है मैं कितनी भी बड़ी लिस्ट ले लूं, सौरभ विल हैव एटलीस्ट 5 मोर, एंड नलिनी जी विल हैव another 5 more on that. That's the great fun of it. So let's keep adding to it, and we'll talk about what we think about double roles. Yeah, sure. Saurabh? Yeah, so my all-time favorite double role, which was आई थिंक मैंने वो पहली डबल फिल्म थी जो मैंने देखी, आई नोटिस्ड इट, आई गेस दैट इज सत्ते पे सत्ता, फॉर श्योर। सो हाँ। सत्ते पे सत्ता इज माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म, आल्सो फेवरेट अमिताभ बच्चन फिल्म, आल्सो इन हिंदी, एंड इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट डबल रोल फिल्म आल्सो। तो वही जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड दैट बाबूज एंट्री, दैट एंट्री इज लाइक आइकॉनिक एंट्री, वो गार्गलिंग जो Superb. बैकग्राउंड, Yeah. Yeah. that is something else. And even there's a scene where he's changing his islands, Yeah. or then you see cut to they show this guy, not Babu, the other Amitabh Bachchan, who is the protagonist. He is like वो एकदम jolly type के
protagonist, and the happy go lucky type, and he's riding his vehicle, and then वो बहुत सारे गुंडे chase करते हैं, and cut you see Babu changing his lens. That was a brilliant like editing they did, and R.D. Burman's brilliant background score. So ये सब mind में हमेशा like अभी भी है, वो चलता है. And then of course चैन कुली की मैन कुली की. Like I have beautiful memories of these films. So Satya Pe Satta is a very memorable film for me, not because it has a double role or something, because it had a humor, many feel good things. Oh, तरबूज लाना वो सब भी है, and again a double role भी है, and yeah, that's my favorite. I like to mention one more film, which I think nobody will mention. I'm not talking about us. Like generally, nobody mentions about this film. But I think that that film used this technique of multiple role or double role uh, very intelligently, I guess. That is this film Oye Lucky Lucky Oye. So Oye Lucky Lucky Oye में परेश रावल तीन different he plays three different roles. And the interesting thing is uh, Abhay Deol's character. So Abhay Deol के पापा होते हैं परेश रावल, the first Paresh Rawal. You see that established that this is his father. After that, you see these other Paresh Rawals. They are like father figure to him. So all these three are father figure to him. One is father, of course. The other two are father figure, and these three always created conflict in his life. इन तीनों ने कलेश किया है इसके जीवन में. पैदा किया है. हाँ. Yeah, that's why he always see his father in them. और सौरभ, परेश रावल एंड अंदाज अपना अपना. Of course, of course. Of course. वो तो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है. मैं सोचा मैं कुछ अतरंगी लेके आऊंगा. Hey, but Saurabh, this is a lovely, fabulous choice of yours, of Oh Lucky Lucky. You reminded me, and also the reason that you're giving now, that they always remind him of his father. So carry on about Oh Lucky Lucky. No, the Nalini, it also reminds me of one very important factor, that how lucky we are to have Saurabh here to talk about some unconventional films which don't easily come into everybody's mind, and he can then highlight those things brilliantly. Thank you, Saurabh. Absolutely. Continue, Saurabh. Yeah, so yeah, जैसे मैंने कहा कि वो father figure या patriarch, he always see whenever they like he gets into trouble, like after his first episode, the childhood episode, when the other two episodes when he gets into trouble, he feels like this he's the person. Paresh Rawal's character is the person because of which I am in this situation. So that's why I think to showcase that conflict and that father figure kind of thing, the director shows the same face. शायद like from an audience point of view, शायद वो दोनों दिखने में अलग होंगे मूवी में, मूवी की दुनिया में शायद अलग होंगे दिखने में, मगर उसके लिए हमेशा वो परेश रावल ही है. हाँ. And one more बढ़िया इसमें दिवाकर बैनर्जी का मुझे लगा कि the entire film you see from Lucky's perspective. वो हीरोज जर्नी आप हीरो के साथ ही है. दैट्स व्हाई आपको भी वो दोनों परेश रावल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपने फिर से परेश रावल देख लिया. अरे ये फिर से क्यों आ गया, अरे ये तो उसके पापा थे ना, ये फिर ये ऐसे अलग सेटअप में क्यों आए, आपको आप यू नेवर क्वेश्चन दैट. Interesting. Yeah. Quite interesting. Yeah, you're right. We never questioned it, no? It's so long back that we saw that film. Superb, Saurabh. Superb choice. You're making me want to see the film again. और आप बताएं नलिनी जी, आप बताएं आपका प्रेफरेंस क्या है, आप क्या देखना पसंद करती हैं, आपका फेवरेट कौन सा डबल रोल फिल्म है? हाँ जी. ऑल्सो मेंशन नलिनी जी कि आपने कौन सी डबल रोल फिल्म पहले थिएटर में जाकर देखी? The first theatrical experience of watching a double role or multiple role. Yeah. So for me, the top choice was Ram aur Shyam, which Ashuji has spoken about, and I've seen that in the theaters. All these films that I'm going to talk about, I have seen in the theaters. I was very fortunate, and वो Ram aur Shyam के बारे में क्या ही बोले. So it was absolutely stunning, and our whole family we were all huge fans of Dilip Sahab. तो थिएटर में शायद एक बार नहीं, एक दो बार देखी है, मतलब more than once. Also, recently there was a Dilip Kumar Sahab festival in Bombay. I think it was in other cities also. It was organized by the Film Heritage Foundation.
And I must say that I saw all the 4 films that they had. They had Devdas, they had Ram or Sham, they had An, and they had Shakti. And I saw Ram or Sham again in the theaters. And the experience was surreal. This was a few months ago. You know, the manner in which Dilip Kumar Sahab essayed both the parts is till date a lesson for all actors. So Ramar Shyam is my absolute top favorite of double role films and from the male double roles. और फिर मेरी एक हिंदी फिल्म है जो बहुत ज्यादा फेवरेट है, उसके बारे में भी बहुत लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन I'll tell you why I love that film for the double role specifically. Now Rama Shyam Ashuji has already spoken about, so I'm not going to speak about it, that one is a weakling and one is street smart and all of that, and that is how double roles have been portrayed in our Hindi cinema. But there is one film which was directed by Sameer Ganguly, and it has Rakhi in the lead, and the name of the film is Sharmili. Now in Sharmili, of course, they're siblings. Again, amongst the female roles that I have seen, and this again I saw in the theaters, and you know, there is a beautiful part which, okay, you can watch it on your laptop or you can watch it on your TV, but in the theater, the most stunning bit of watching, one of the most stunning bits was when the softer character, their names are Kanchan and Kamini. So Kanchan is the one who's innocent, and Kamini is the one who's a little forward and, you know, street smart. So jab when Kanchan takes Kamini's place and everybody thinks that Kamini is no more, for a long time they think that she's no more, that entire screen, you know, that large screen in the theater, it's black. You can't see anything. So for a few seconds you think, what is going on here? And then suddenly that music starts and you see just a lighter being, you know, the flame of a lighter, and you see a shimmering white sari, and the song, the female version of Khilte Hain Gul Yahan, and she comes. It was so beautifully done. But why Sharmili is my favorite is for 2 reasons. One is I felt Rakhi did tremendous justice to it in terms of changing her voice a little bit, changing her body language completely. It did not look fake. She did justice to both the roles. It was not just कि एक innocent है और एक वो है. इसमें बहुत सारे layers थे दोनों में. And from what I remember, this is the only film of double roles that I have seen where one sibling actually wants to kill the other, and the circumstances happen. So Sharmili, if the listeners have not seen it, I highly recommend that you watch this film because the music is outstanding. It's S.T. Burman's music. The lyrics are beautiful by Neeraj. Shashi Kapoor is so fabulous. And every character has got layers, not just these 2 girls. And she actually wants her twin to die. So she plots, you know. So Sharmili is my top favorite. And of course, Angur. What can we say about Angur? These are my favorites, Angur, Ramar Shyam or Sharmili. And also I wanted to talk about Ashuji and Saurabh. You all have mentioned 2 films. Ashuji has mentioned the Mithun Chakravarti film Amne Samne, and Saurabh has mentioned Oye Lucky Lucky. So if we can further extrapolate this discussion to one part of the double roles, they are siblings, they're twins, okay? But there are other films which have come out and which were very interesting films where they had nothing to do with each other, like Satya Pe Satta. They're not related to each other. And so they are doppelgangers. So if we can think about more films of doppelgangers who just look alike, you know, then we can go ahead with that. So Amne Samne is again 2 characters who are not siblings. Sachcha Jhoota had a Yes. Typically close, very similar kind of a plot line. Yes. Again, they were not siblings. And then the world famous, I think, Kali Charan. Yes. With Shatrughan Sinha, where they were not siblings. Dawn, which was like Kali Charan, where they were not siblings, where Amit again played a double role. And despite that,
They were not siblings, and you know, strangely, I'll tell you how this is how the cinema audience has also evolved, where you created a dark character out of one brother and a white character. So literally black and white हुआ करता था. जो white होता था वो मतलब स्कूल भी जाता है, पढ़ने में भी अव्वल है, खेलने में भी अव्वल है, और माँ बाप की इज्जत भी करता है, कमाई भी करता है, सब कुछ जो अच्छा हो सकता है वो सब उसमें कूट कूट के डाल देते हैं. और जो डार्क कैरेक्टर होता है वो डार्क मतलब ब्लैक होता है, ग्रे नहीं होता है. जितनी बुराइयां, शराब वो पिएगा, दारू वो पिएगा, लड़कियों के साथ वो घूमेगा, माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा, रिवोल्ट करेगा, रिबेल होगा, दुनिया भर की वो चक्कर जो है ना वो दूसरे में डालते हैं. सिगरेट पीना जो है, उस वक्त सिगरेट पीना was not considered to be a great thing. So one of the things which was simpler in terms of characterization, if you wanted to show that he's the dark character, or even if you say let's say gray character to a certain extent, you would know for a fact that he would be smoking. Whether he smokes a cigar or whether he smokes a pipe or whether he smokes a cigarette, he would smoke. That's how it is. Now it has become different. Today, in today's days and time, bad is good. Audiences prefer the darker character shade of a character, grayer shade of a character, and enjoy watching the antiques of this particular person, because for them the good becomes so boring and monochromatic कि ये इतना सारा सब अच्छा 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 एक इंसान के अंदर कैसे हो सकता है. Identifiability नहीं है. We live in a cynical world, so there has to be something which has to be a little gray per se. But Ashuji, in those old films also, you always root for the gray character. आपको सीता से ज्यादा अच्छी लगी गीता, आपको हाँ, अंजू से ज्यादा अच्छी लगी मंजू, आपको राम से ज्यादा अच्छा लगा श्याम. लेकिन एक मिनट है, वो लोग थे ना, वो डार्क नहीं थे. आपके डार्क कैरेक्टर्स में जो कैरेक्टर डिफिकल्ट था, राम और श्याम में प्राण साहब थे, वो डार्क थे. जब आप सीता और गीता देखते हैं तो सीता और गीता में आई फॉरगेट द विलन नाम, कौन था. But my point was, you always root for the smart guy. या बिकॉज जो अंडरडॉग है ना, यू वांट टू रीच आउट एज एन ऑडियंस टू द अंडरडॉग एंड ट्राई एंड हेल्प द पर्सन आउट. सो you did not sort of discard that character. You just felt for it and wanted to do it. And you have another character that comes and does exactly what your emotion is. And that is why you start rooting for that character. आशु जी, आपने अभी, हम लोग डबल गैंगर्स की फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो फिल्म आई थी वो थी हम दोनों, देवानंद वाली. तो अगेन दे आर नॉट रिलेटेड, एंड व्हाट अ फिल्म. I mean, what a beautiful film. What music, and what a emotional, beautiful film. Or Dev Saab ka character, I mean, he did a very good job in that, I thought. And आपने सच्चा झूठा मेंशन किया, उसमें एक और फिल्म है, प्रकाश मेहरा की पहली फिल्म हसीना मान जाएगी, जिसमें शशि कपूर, but they're not related. And so what you were just saying about dark character, that actually fits in there very well, because he's the second Shashi Kapoor is really dark. And Hasina Maan Jayegi, if you haven't seen, please watch it. I'm sure you have seen it, Ashuji, but Saurabh, if you haven't seen it, first of all, it's got lovely music, and उसमें एक कवाली या कुछ है जिसमें शशि कपूर लड़की भी बनते हैं. But जो बुरा वाला शशि कपूर है ना, again, it's a war zone where they both meet. It's a little bit like हम दोनों, और वहां पे मिक्सअप हो जाते हैं. But the suspense and the court case, that is very outstandingly done in Hasina Maan Jayegi. Then when we're talking about doppelgangers, there is an interesting film, Chhuk Gaya Aasman. It took it to another level, because the spirit enters the body of the bad guy and turns him into a good guy, So that is another film, again, great music, and uska jo gana hai, Kaun Hai Jo Sapnon Mein Aaya, that is iconic. Of course, the first half of the film and the comedy and everything is quite unbearable, but as a topic, as a writing, I thought it was very interesting. And yeah, and Saurabh, like you were saying, we root for the Gitas and we root for the Shams, and quite right, but they're not like evil. Like in Sharmili, the Kamini character, she becomes a victim of circumstances. Of course, she's, like they put it, quote unquote, tez ladki, but she wasn't tez. She was just smarter than her sister.
She's not a bad girl in any way. It's just that she goes to clubs and she has friends and she has had a boyfriend before. In the movie, his character is played by Ranjit. And she becomes a victim of circumstances and she ends up being a gangster's mall. And she knows that her life is in danger. So she doesn't even try to escape from there. She's come to terms with her life and she says, Chalo, yehi meri zindagi hogi. Till one day when she actually sees her timid sister, and obviously years have passed or months have passed, I can't say, but she sees her timid sister who hardly ever spoke, living the life that was meant for her. And that's when she realizes that she has to get out of this place and she has to, you know, fight for her life back. And the only way that she knows to do that is if Kanchan dies, you know. And the way Rakhi has enacted both these roles, I mean, no other role of a female protagonist which is so different. Yes, Sridevi was fantastic in Chalbaz and Hema Malini was great in Sita or Geeta. But for me, Sharmili just stands out for those reasons. So yeah, for me, Sharmili is a top favorite amongst the female-oriented roles. Yeah. So doppelgangers के और हाँ हाँ, मैं 3 फिल्मों का नाम और लेना चाहता हूँ, जो again there are characters who are not related to each other, and I love those films, and they are blockbuster films. There is a film called Aankhein with Govinda and Chunky Pandey, where Govinda has a double role, जिसका ओरिजिनल था दो फूल, जिसमें महमूद है, and I think शायद विनोद मेहरा विनोद करेक्ट वो मुत्तुकुड़ी कबाड़ी हड़ा वाला जी they are same plots, मतलब same story premise है जिसके ऊपर फिल्म बनी हुई है, and it's an interesting plot the way the film works in a way. Then the third film, which I thought which again for its time was brilliant and great performance. It was a film made from I think a Tamil language, which Kamal Hassan originally acted in the film. In Hindi, it was Dharam Sabu did. Film called Ghazab. Again, these are two characters who looked exactly like each other in a large way, except that the one Dharamji had little protruding teeth, 4 teeth in the front, whereas the other Dharamji was as good looking and as handsome. Also, he's not as bright, you know. They've shown him as a slightly dim-witted but very warm-hearted. And Ghazab is an extremely emotional film. Yeah, very nice. Yeah. And the way Rekha ji is performed in the film, and how Dharamji lands up there, and how Dharamji is used, how it's a great idea of merging the soul with the body to give this body that kind of strength to fight back. That's a completely different conceptually a completely different film for a double role. I've not seen a double role of this kind where there is one person who joins with the other to add physical strength like this. Yeah. These are the other 3 films that immediately come to mind where the 2 characters played by the same actor are not actually related to each other, but yet have an interesting premise to sort of watch. हाँ, like झुक गया आसमां में strength नहीं है, लेकिन आत्मा उसमें आ जाती है. सही है. हाँ, बहुत interesting. सौरभ, आप कुछ कह रहे थे? आशु जी ने आंखें फिल्म का जिक्र किया. आंखें is a festival of all doppelgangers. उसमें राज बब्बर का भी doppelganger, लास्ट में कादर खान का भी है, मगर चंकी के साथ मंकी है. जी बिल्कुल. हाँ. अच्छा सौरभ, अब आप, आई नो यू कांट होल्ड योरसेल्फ बैक, तो आप प्लीज, मैं आपको माइक दे रही हूँ, आप प्लीज कादर खान के बारे में बहुत बताइए हमें. Actually, I also had Aankhein in my mind for doppelgangers. And one more film which I think my generation celebrated it, that is मेरे generation की film है, मैं कह सकता हूँ, that is कहो ना प्यार है. हाँ. नहीं, मुझे भी मजा आया उसमें सौरभ. हाँ, मगर मैं 10 साल का था तो वो doppelganger, yeah, मुझे भी मजा आया था. I was 9 years old and ऋतिक को हमने पहली बार देखा. And then the second Hrithik, जो रोहित के बाद जो ऋतिक आते हैं, then you see this iconic, now it's an iconic dance, एक पल का. Yeah, वो तो थिएटर में 2 बार देखी थी मैंने सौरभ. एक बार मैं दूसरे फ्रेंड्स के साथ, दूसरी बार I took a whole lot of friends to watch it.
and they were looking and they started judging me because there were people who don't like Hindi films. but I was enjoying myself looking at Hrithik Roshan. Sorry. Yeah. और आशु जी ने काली चरण का जिक्र किया. काली चरण में एक डबल गैंगर है. काली चरण में वही एक तो शत्रु का ही कैरेक्टर डबल गैंगर है ना. एक नाम है डबल गैंगर. लॉयन नंबर 17. number 17 लॉयन. Oh gosh, that was so funny and so brilliant, because throughout the film Ajit just kept saying lion. In other films also he couldn't pronounce lion, so he said lion. It became super. But that was very good, na Saurabh, that lion turning to number 17. Yeah, that was the biggest twist in that film. Yes, yes. और एक फिल्म है जिसमें कुत्ता का डबल गैंगर है. हाँ, वो तेरी मेहरबानियां. नहीं, नो, बोल रहा था बोल. हाँ बोल रहा था बोल. करेक्ट. उसमें कादर खान तुम्हारे वो अंधे हो जाते हैं 6 बजे के बाद. हाँ, उनको ऐसी एक बीमारी रहती है हर फिल्म में. ये जो कुत्ते वाला है ये सच्चा झूठा में भी है. हाँ. I think it was inspired from Sachcha Jhuta. हाँ, हो that thing. सकता है. Because this guy was मनमोहन देसाई fan, no? देवेंद्र हाँ. बहुत बड़ा fan. और कुत्ते का नाम हमेशा मोती होता है. हाँ, by default. घोड़े का नाम तूफान. हाँ जी, बिल्कुल. तो हम अपने लिसनर्स को कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने अगर ये फिल्में देखी हैं तो बहुत अच्छे, और अगर कोई फिल्म इनमें से आपने नहीं देखी है तो आप देखिएगा और मजा उठाइएगा. बिकॉज दीज आर स्पेशली फिल्म्स लाइक हसीना मान जाएगी शशि कपूर वाली, और शर्मिली आई थिंक मेनी पीपल हैव नॉट सीन. राम और श्याम तो आई थिंक द होल वर्ल्ड वुड हैव सीन. और देवानंद साहब की हम दोनों भी आई थिंक आज की जनरेशन ने अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज देखिए ये फिल्में. बहुत मजा आएगा इनको देख के. और गजब जो धर्मेंद्र की फिल्म है वो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, उसको भी आप देखिए. इट्स अ रिवेंज सागा, बट अगेन अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन इट. और तो हाँ जी, ओवर टू यू आशु जी. तो मैं ना कुछ 2-3 अलग फिल्मों का नाम लेना चाहता हूँ. मेरी लिस्ट भी बहुत लंबी है लेकिन आप बोलिए. हाँ, लेकिन मैं अभी कुछ अलग किस्म का डबल रोल की बात कर रहा हूँ मैं. जी. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम हसीना मान जाएगी बात कर रहे थे, तो करंट हसीना मान जाएगी की अगर देखें तो वहां पे यू हैड अ गोविंदा हु वाज इन लव विद करिश्मा's कैरेक्टर, and you had the same Govinda turn into an older Govinda who Aruna Irani fell in love with. Superb, it was superb. So you had the same character who was forced to play 2 roles to get out of a situation, which Govinda has done brilliantly, I think in Hero Number 1 also. No. He played this older, not in Hero Number 1. Hero Number 1, his father, Kader Khan, plays an older guy when he comes to the house as his uncle or something. So उसमें साजन चले ससुराल में भी है, जहाँ पे टब्बू के साथ भी है, करिश्मा के साथ भी गोविंदा है, and एक और है, I think it is definitely Coolie Number 1. Yeah, but he doesn't play older, na? He plays his age. No. I'm saying he plays 2 characters. Yes. He's forced to play 2 characters. So when we're talking about double roles, one double role is where they are siblings. One double role is where they have got no relation with each other, which are doppelgangers. Yeah. This is another dual role played by the same character. And yet it becomes interesting. But there is another film which I would like to state, and I don't know whether you agree with it or not, where it is the same character being played by 2 actors. Yes. सौरभ को बोलने दीजिए ना उसके बारे में. हाँ, आप बताइए सौरभ उसके बारे में. कर्ज है क्या? कर्ज भी है और ये वादा रहा भी है. हाँ. और कर्ज भी है, एक कर्ज भी है विद लॉट ऑफ डेट. वो नहीं, उसकी नहीं बात करेंगे. उसकी बात नहीं करेंगे सौरभ. हम सुभाष घाई वाली कर्ज की बात करेंगे. और वो डबल रोल नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. सौरभ उसके बारे में बात कीजिए आप. No, so like I was talking with you folks, right? कि जो reincarnation वाली फिल्में हैं उसमें आप देखिए same actor is playing the other character also. Like Dilip Kumar in Madhumati, reincarnated was also Dilip Kumar. In Om Shanti Om, Shah Rukh Khan reincarnated as Shah Rukh Khan. But कर्ज is a very different, बहुत अलग फिल्म है जिसमें राज किरण reincarnated होके reincarnate होके ऋषि कपूर बनते हैं. So that was very different. बहुत अच्छा था. Yeah, बहुत अच्छा. It's my favorite सुभाष घाई film actually till date.
And again, super hit music, brilliant music in the whole film. Superb, every song. And Ashu ji, आपने अभी जिस film की बात की, ये वादा रहा, this is based on a novel by Daniel Steele. It was one of the novels that of Daniel Steele was a very popular novelist, used to like all this, and this was one of a novels which is called The Promise, and it was made in Hollywood, and the Hollywood version is really not good as Ye Vada Raha, and Ye Vada Raha I thought was much better, though it didn't do well at all. Again, R.D. Burman's music was beautiful, and the interesting thing about Ye Vada Raha, जो आपको मालूम होगी कि इसमें बहुत अच्छी चीज की थी, क्योंकि दूसरे लोग जब ये नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि कैसे यार कि एक दो लोग अलग हैं या सेम है, उनकी आवाजें क्यों अलग हैं, ऑल दैट तो इसमें इन्होंने जया बच्चन का इस्तेमाल किया था टू डब फॉर टीना मुनीम एंड पूनम ढिलन, एंड रियली फॉर मी आई हैव सीन दिस मूवी सो मेनी टाइम्स, but the first time I saw this film, it was not in the theater, it was on VHS. And Jaya Bachchan dubbed for Tina Munin and for Poonam Dhillon, and she did such a brilliant job. And that was one of the highlights of Ye Vada Raha for me, apart from the music and the story, because I knew the story, I'd read the novel. It's such a sweet story, but the film didn't do well at all. I don't know, a little bit of a mystery. I guess they couldn't accept the fact that there is one scene in that which is a little like, I think I don't know whether we were talking or I was talking to somebody else, but after the plastic surgery and everything is done and they remove Shami Kapoor removes the bandages from her face, one would imagine any girl, a young girl, would first want to see what she looks like. But in this, what happens, she's so keen to get in touch with her boyfriend or whatever, she doesn't bother to look at herself. She just runs to the telephone because she wants to call Rishi Kapoor. And then she goes and she dials the number, and then I don't know if somebody picks up or not, but when she turns around, then she sees a mirror on the wall. And that's the first time she sees her face. And she's shocked and she's not able to talk on the phone because Poonam Dhillon has now become Tina Muneem. So I thought that was strange, but yeah, I like the movie. Saurabh, there are two films I would like to hear from you about. And both of them are obviously multiple characters. One is Surya Vansham, which Oh God, Ashuji, kya baat kar rahe ho? Yeah, and the other is Lamhe. Oh, Lamhe is, wow. imagine taking these two names in the same breath. हाँ, सूर्यवंशम और लम्हे एक ही लाइन में. Lamhe in the same breath. Oh God. मतलब आप देखो, मैं सौरभ को आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि सौरभ का रेंज कितना बड़ा है, स्टडी कितनी बड़ी है कि आप कोई भी फिल्म के बारे में बात करो, he comes up with some brilliant anecdotes. So over to you, Saurabh. Yeah, I have a point. Talking about, I want to talk about Rakesh Roshan's filmography. Very, if you see his filmography, it's very interesting क्योंकि आशु जी ने बहुत सारे फिल्मों का नाम लिया जिसमें there is no double role, but a guy is playing another role, like another character, or there is a transformation. इस तरह की चीजें, या फिर हमने reincarnation का भी हमने उसके बारे में भी बात की. So if you see Rakesh Roshan's film, a character, the main protagonist, will always transform into someone different, or there will be a reincarnation literally, और एक double role जरूर रहेगा. आप उनकी सारी फिल्में देखिए. First as a director, खुददार थे. खुदगर्स, yes. खुदगर्स में देखिए वो शत्रुघ्न सिन्हा का जो कैरेक्टर है, वो पहले गरीब रहते हैं, फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, अमीर हो जाते हैं वो. In second film, Kishan Kanhaiya, again reincarnation, Ram or not reincarnation, Ram or Sham, double role kind of. वो तो डबल रोल ही है, हाँ, डबल रोल ही है वो. अनिल कपूर. Then you see खून भरी मांग, उसमें भी वो रेखा का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, फेस उनका चेंज हो जाता है, like beautiful. Then Karan Arjun reincarnation is there. Then in कोई मिल गया, if you see ऋतिक को जब जादू उसको शक्ति देती है तो वो बहुत स्मार्ट हो जाता है, यो कूल हो जाता है, वो गाना वाना गा रहा है, it's magic. Yeah. और कहो ना प्यारे में literally like the other guy comes. So in every film, if you see something, some transformation, some change is happening. Yeah. Like drastic change is happening to the protagonist. Yes. Everything is there in Rakesh Roshan's filmography. पर सौरभ मैं छोड़ूंगा नहीं. I still want to hear your point of view for Suryavansham and for Lamhe.
सो सूर्यवंशम मैंने बहुत बार देखी, सेट मैक्स का वो तो स्टेपल फिल्म है, हाँ, हमेशा आती है सेट मैक्स में। तो मैंने देखी, मैंने एक्चुअली वो फिल्म तमिल में भी देखी है, इट्स अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म। उसमें किसने प्ले किया था अमित जी का रोल? शरद कुमार, शरद शरद कुमार। कुमार, ओके ओके। तो वो मैंने दोनों लैंग्वेज में देखी है वो फिल्म, और मुझे मतलब पसंद आई, आई एंजॉयड एक्चुअली, आई क्वाइट एंजॉयड सूर्यवंशम। और हम्म। मैं हमेशा डरता था कि मैं कभी खीर नहीं खाऊं, उसमें खीर वाला एक सीन है। वो कमला पसंद की विमल खा के वो खीर खाया है शायद, इतना निकलता है लाल। हाँ, एंड a trivia about Suryavansham, which also comes under our topic also, if you see, उसमें गाना है वादा है वादा चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा, एक गाना है सूर्यवंशम में, which is composed by Anu Malik. So Anu Malik used his own composition. So एक दादागिरी करके एक फिल्म है शायद 1989, गोविंदा की एक फिल्म है, उसमें गाना है जो अनु मलिक ने खुद गाया है, जो मुस्कुराहट मुझे दे रही हो वो मुस्कुराहट किसी और को ना देना, वही सेम ट्यून उन्होंने इसमें, ओ वादा गॉड। है वादा। सो अगेन डबल गैंगर। ये अलग किस्म का डबल रोल हुआ, यार करेक्ट। अलग किस्म की, ऐसे तो बहुत कितने माय गॉड निकलेंगे। ओ यार, लवली लवली सौरभ, सौरभ। अब एक फिल्म की बात, दो फिल्मों के बारे में मैंने बात करनी है, इससे पहले कि सौरभ लम्हे के बारे में बात करें। लम्हे रिक्वायर्स अ लॉन्ग डिस्कशन। एक फिल्म अगर लिसनर्स या आप लोगों ने नहीं देखी है, तो दो फिल्में हैं एक्चुअली, दो जिनमें बहुत अजीब किस्म की चीज इन्होंने की है। अजीब नहीं है बट स्टोरी के साथ जो भी है। तो जैसे आशु जी ने शुरू में कहा व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक, यहाँ पे लिटरली व्हाइट एंड ब्लैक है। एक गोरा है और एक काला है, वो तो एक फिल्म है गोरा और काला विद राजेंद्र गोरा और कुमार। काला, बट करेक्ट बट एक और फिल्म है इज्जत, जिसमें धर्मेंद्र है, और करेक्ट। जो जयललिता की ओनली हिंदी फिल्म है, यू नो द ओनली हिंदी फिल्म। ऑफ कोर्स शी एक्टेड इन अनदर फिल्म व्हिच नेवर गॉट कंप्लीटेड। बट इज्जत में स्टोरी में ऐसा होता है कि बालराज सानी ठाकुर हैं और वो ट्राइबल किसी आदिवासी लेडी के साथ उनको प्यार होता है, एंड देन दिस ओल्डर धर्मेंद्र इज born. So they put charcoal on him to make him dark, to look like an Adivasi. And then later on, Balraj Sahni marries somebody else, and then another Dharmender is born. So that is Izzat. It again had lovely music. It had some great music. Ye Dil Tum Bin is that beautiful. और एक वो जयललिता का डांस है उसमें, लागी बदन में ज्वाला। और एक फिल्म है गोरा और काला, which I actually, you know, Ashuji, when I saw गोरा और काला, that the काला वाला Rajinder Kumar, you feel He has sorry a for him physical, as a child, but they made him very scary, you yeah, he know, became dark, not only very in mean. complexion, he became yeah, mean also. Yeah, I think he had a handicap also, no? Probably he had had a hand का कुछ, handicap, yes. yeah. And he falls in love with Hema Malini, but she's in love with the fair Rajendra Kumar. Again, it had some decent music, but these two films had this thing of एक literally एक काला है और एक गोरा है. Over to you, Saurabh, for Lamhe. I'm waiting with bated breath. आई थिंक लम्हे हम तीनों को ब्रीफली डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी डिस्कशन वर्दी फिल्म, क्योंकि Yes. बहुत ही अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। दो द सेम सिमिलर सिचुएशन इज देयर इन मौसम आल्सो, संजीव कुमार की। Yeah. बट इट वाज क्वाइट, इट इज वन ऑफ यश चोपड़ा's बेस्ट फिल्म जो चली नहीं। इंटरेस्टिंगली उस सेम टाइम में फूल और कांटे फूल और कांटे. Yeah. ब्लॉकबस्टर हो गई वो फिल्म। ये फिल्म चली नहीं क्योंकि ऑडियंस कुडंट टेक दैट प्रीमाइस, राइट? Hmm. प्यार हो जाता है, एंड श्रीदेवी वाज ऑसम इन दैट फिल्म। Superb और she was. और वो जो उनका फियांसे रहता है वो बहुत ही अलग तरह तरीके से प्रोनाउंस करता है नाम, क्या है नल्ली जी वो? पल Pallo, पल्लव। Pallo, Pallo. And that guy is Deepak Malhotra, and the whole nation was crazy about him as a model. I mean, he, of course, he's changed his name and become Italian and become a chef and everything now. But so Saurabh, continue, because yes, Lame is a film I'd love to share my thoughts about also. और उसमें अगेन जैसे सूर्यवंशम में गाने का एक डबल गैंगर है, वैसे ही इसमें भी है। कौन सा वाला, कौन सा वाला? जो गाना है कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो, कभी मैं कहूँ, that one. अच्छा, हाँ. yeah, so the tune of that song, the melody of that song is was the theme music of Chandni.
हाँ, right, you're right, you're right, you're right. फैमिली के बैकग्राउंड में बजता है वो गाना Yes, and they later took and made a song out of it. yes. Yeah. But Raj Kapoor did a lot of this. Lot of his Yes, background musics eventually became the songs of his next films. That yeah. was done very, very well. Yeah, like Rakesh Roshan also has done it. Na? In Koila, that music that he's taken is from Basu Chatterjee's Khatta Meetha, the main song. It's always playing in the background of Khatta Meetha, and then he made it into a song in Koila with Shah Rukh Khan. That most popular song, Saurabh, of Koila. देखा तुम्हें तो हो गई दीवानी. नहीं, मुझे याद आएगा वो तन्हाई तन्हाई तन्हाई. तन्हाई तन्हाई या तन्हाई. पता है जब लम्हे आई थी तो हमें टिकट्स नहीं मिले थे, हमें नीचे बैठ के देखना पड़ा. और उसी दिन लाइक यू सेड ना, फूल और कांटे रिलीज हुई थी, तो ऑब्वियसली हम लोग फूल और कांटे तो देखने नहीं जा रहे थे, हम श्रीदेवी की फिल्म देखने आ रहे थे. एंड our family, we were all sitting and we were mesmerized, absolutely mesmerized. And in my growing years, I have read a lot of Mills and Boon novels. And I don't know whether Hani Rani has picked it from there, but the idea is definitely a Mills and Boon novel. I don't know the title of which one, but the story is Mills and Boon. So for me, everything worked. The story worked. The fact that she's younger, the fact that, you know, he's in love with an older woman. And then there is this, in the Mills and Boon novels, there's this, in the novel, of course, there's a Diane. Here, that lady is not a Diane. I mean, she's in love with him, but they've shown a little negative. And for me, every single thing about Lame, I tell you, we were heartbroken. We were heartbroken that it didn't do well. And I didn't see Phool aur Kaante for years together because I got very angry. Kaun hai ye Ajay Devgan? Kyun iski film chali? And later on, when I saw it many years later, so I understood the youth, that's what they wanted. And then recently on this program, now everybody is latching on and saying that what Aditya Chopra said was right. He had asked Yash Chopra to remove that one line when she's a little kid and then she never sees his face. So she says to Wahida Rahman कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं शादी कर लूंगी उनसे. तो वो आदित्य चोपड़ा ने कहा है अपने प्रोग्राम में कि शायद उस वजह से फिल्म नहीं चली. But I don't know, मुझे नहीं, ahead of its time maybe, but मेरे लिए फिल्म बहुत ही खूबसूरत, बहुत बेहतरीन. मतलब for me, I didn't find anything wrong with it. It was just fabulous. And Anupam Kher, Anil Kapoor. And the only thing is that lady who played, I think her name is Kiran in the film, who's Anil Kapoor's girlfriend in London. I read an article where she was very upset because they didn't let her dub for herself. They got Kiran Kher to dub. So she was a lady who was known to the family, I think, in London. And so she says, मेरा character ही बर्बाद हो गया because मुझे dub ही नहीं करने दिया. So she's saying that's why I ended up looking a little out of place. So that's about Lamne. And one more thing about it is the whole world knew how Anil Kapoor was very sort of attached to his mustache, and how for Lamhe he shaved his mustache off. It had become a big talking point at that point of time when the film released, because he had to show two different characters. He had to show himself younger, he had to show himself older. Yeah. So actors, you know, when they get into the skin of the character, they will do anything to try and show that this is how the character should be, and they live and breathe the character. And that was done very well over there. Everything was so beautiful about Lame, no? I mean, Saurabh, you're the younger generation. What did you think about it? Was it for you tough subject to swallow when she actually, I'm not saying it was a perfect film, it had flaws, but was it tough for you to swallow the ending? I actually didn't like the film when I saw for the first time. Okay. I didn't like the film. Yeah, मुझे बहुत melodramatic, as you said, no, Mills and Boons वाला Yes, feeling आया था. it's completely Mills and Boon. It's a Mills and Boon story, I'm telling you. The only thing is now when you watch it, you feel कि थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी छोटी कर सकते थे. नलिनी जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. हर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अपने उस वक्त के लिए
क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज टाइम से सोसाइटी चेंज होती, इवॉल्व होता है। कुछ चीजें जो उस वक्त नहीं लगती थी ठीक, अब एक्सेप्टेंस उसके लिए बढ़ जाता है। इवन इफ यू टेक इंडिया एज अ सोसाइटी, यू विल अंडरस्टैंड दैट बहुत सारी चीजों का फर्क होता है। एंड आई व्हेन आई वेंट एंड सॉ द फिल्म एंड आई केम आउट ऑफ इट, द मोमेंट आई गॉट आउट ऑफ द फिल्म, आई सेड दिस फिल्म, I think I saw it in Metro Cinema at that point of time. I said this film cannot work simply because this is where the whole angle has gone wrong. And in romantics, this is exactly what Aditya Chopra said, that the relationship was put to test by the filmmaker, and the Indian audiences did not accept it. They did not accept this forward thinking or that the film was trying to project. Although, to the filmmaker's credit, to Yashji's credit, he did everything possible to make sure that he conveys to the audiences that they are not father and daughter. That is why he said कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, उसके साथ इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बेशक कुछ नहीं है, क्योंकि उसी घर में रह रही है। और क्यों उसमें एक डायलॉग भी उन्होंने डाला है, जानबूझ के एक डायलॉग भी उन्होंने डाला है बार बार, जब अनुपम खेर उनको याद दिलाता है, व्हेन ही सेज ये पल्लवी की बेटी है लेकिन ये तुम्हारी बेटी नहीं है, सिद्धार्थ और पल्लवी की बेटी है। ही कीप्स ऑन, देयर इज दैट डायलॉग आल्सो टू रीइंस्टेट टू द ऑडियंस दैट लुक शी इज नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू हिम। तो मुझे तो इस फिल्म में कुछ ऐसी बात ही नहीं लगी कि ये क्यों नहीं चली, यू नो, आई फेल्ट वेरी सैड, यू नो, दैट इट। नलिनी जी, मैं आज के जमाने में, आज के पर्सपेक्टिव में भी अगर मैं बात करूं, अगर आप एक कैरेक्टर को ऐसा बना करके डालते हैं जो एक दूसरे लड़की को बेइंतहा प्यार करता है और उसके साथ उसकी शादी नहीं हो पाती है, तो वो उसकी बेटी के साथ में प्यार करके शादी करेगा क्योंकि वैसी दिखती है। ये आज भी अगर आप ट्राई करोगे ना हिंदी हिंदी फिल्म में, हिंदी सिनेमा में, ये आज भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो फिल्मों के बारे में बात करने से जगह लाइक हमने बहुत बात कर लिया है। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट हाउ डबल रोल्स यूज्ड टू बी मेड। ओके, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि ये डबल रोल को एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाता है, ये है ना, टाइम से काफी सारी चीजें चेंज होती गई। बट पहले ना दे यूज्ड टू बी कैमरा कॉल्ड मिचेल कैमरा। मिचेल कैमरा जो था, इट वाज अ साउंडलेस कैमरा। वो कैमरा में क्या करते थे, दी दे वर स्पेशल कैमरामैन दैट यूज्ड टू कम टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब, जहां पे दे वुड mask one side of the lens, all right, and expose only the other side, तो दूसरा साइड एक्सपोज नहीं होता था। then that particular portion only, they would rewind that portion, then mask the other side जो एक्सपोज हो चुका है, and expose the other portion जो एक्सपोज नहीं हुआ था। I don't know if it's getting complicated, but this is what they did. That is why if you see very closely, you would see a line in the center. Yeah. So when you see a line in the center, you would realize कि यार ये थोड़ा, मतलब उस वक्त तो लोगों को समझ में नहीं आता था। But the other important aspect that used to happen at that point of time, जो vertical line थी ना, जो आपको कभी दिखती थी या नहीं दिखती थी, आपका एक कैरेक्टर वो वर्टिकल लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करता था। He would not go from right of that frame to the left of that frame. He would continue remaining on the right of the frame. This other person would continue remaining on the left of the frame. And if they wanted to show them together, they would cut and go over shoulder. And then they would do whatever cuttings that was needed. Then धीरे 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 करके जैसे system evolve हुआ, in today's times there is something called the blue mat or the green mat that has come in. With the blue mat that happens, you have the same character performing, looking at one side, and then the same character comes to the other side. So isme, in the blue mat, masking principle is not there. But despite that, they would still not. So in the blue mat or a green mat, इसमें क्या होता है कि पीछे कैरेक्टर के पीछे एक ग्रीन कलर होता है या ब्लू कलर होता है, जिसके ऊपर कैरेक्टर परफॉर्म करता है। The only thing that technically these people need to make sure is that, मान लो सौरभ को हम लोग शूट कर रहे हैं, सौरभ जो है, सौरभ ए है, सौरभ बी है, अब वो ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा होके परफॉर्म कर रहा है। द बिगेस्ट थिंग दैट यू सी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज कि सौरभ ने, चाहे वो ए हो सौरभ या सौरभ बी हो, वो कोई भी ग्रीन कलर का कुछ भी एक्सेसरी नहीं पहन रहा है। They try to make sure
that he is not wearing anything green. और अगर उसने green पहना है तो पीछे का color जो है वो blue हो जाता है. The reason most of the time green and blue is taken is because in your skin tone you will not find a green or a blue tone in your skins. Now you can do your crossings, you can move from one to another. But इसमें जो होता था, इसमें आपका कैमरा का मूवमेंट नहीं होता था, कैमरा होता था फिक्स. Now actors could cross that imaginary vertical line from left of frame to right of frame, right of frame to left of frame without any problem, because post में जाकर के, which is in post production, you can actually key off that entire green and paste a background to it. तो आपका मूवमेंट जो है वो seamless हो जाता है. Further, what has happened is there is something called motion control that has come in, motion graphics that have come in. With the motion control, what happened was not only did you shoot on green, your camera could also move. And this movement of camera is all automatic and it's like a robotic movement. Every single take that you take with that camera, it will move the same axis in the same height, in the same way, every single point of time. And now, since you're wearing a green and blue, you're shooting against a green or blue, not only do the characters move from one left of frame to the right of frame, the camera also rotates around. So you had a seamless movement, both of the character and the actor. There is another aspect whilst you're shooting. What you need to do is Saurabh A is speaking to Saurabh B. And Saurabh A is asking Saurabh B, Saurabh क्या हाल है? And Saurabh B says, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आपका क्या हाल है? अब दोनों सौरभ एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. रियल लाइफ में तो एक ही सौरभ है, दो हैं नहीं. शूटिंग में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस आती है जिसका नाम है नागरा, ठीक है, और एनी अदर ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस. when the director says roll camera, sound starts rolling, camera starts rolling, and there is an action that the director says, and the activity starts. Everything is recorded. Correct? Now, the next time around, there is another recording device B. But all the instructions of roll camera, start sound, action is now not being told by the director. It is being played back by recording device A, audio recording device A. And when the audio recording device A is playing back the whole thing, recording device B is recording the entire audio. And hence, when you record on the other device, you get both the dialogues being recorded at the same time in this device. Is that understood? Is it clear? Very interesting. So when this happens, this is how character A interacts with the character B, and he reacts to his own voice because he knows the timing has to be right. And the timing happens right only when you have the right recording devices. So basically, he's got a dialogue playing in his ear, which this other person is, I mean, his other part would have already recorded, and it's playing in his ear, and he's reacting to that. Now, in layman's language, that's what he's doing. Correct. हमें सिर्फ वो लाइन दिखती थी और हमें लगता था कि पता नहीं ये पहले ये शूट कर रहे हैं इस लेफ्ट वाले के साथ, फिर उसके कपड़े चेंज करके यहाँ खड़ा करवा रहे, फिर दोनों को जोड़. Yeah, when I was a kid, मैंने वो जुड़वा फिल्म देखी थी सलमान खान की. हाँ. In the end, they show the behind the scene, like when the end credit rolls, they show the behind the scene thing, and उसमें दिखाते हैं कि सलमान खान खड़े हैं और उसके बगल में सलमान खान की बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर के सेम एक बंदा खड़ा और बॉडी उसके डबल. मुंह में मुंह कवर कर, फेस कवर करके रखे हैं कपड़े से. हाँ, तो उसमें फेस जो है वो रिप्लेस किया जाता है, and that is how you will realize that how one Salman Khan holds the other Salman Khan, or they do their handshakes or whatever that needs to done. You do that technique when they physically need to interact with each other. Gee, that's really fascinating. That's fascinating for me. So okay, folks, आज के लिए बस इतना ही, और do check out our previous episodes also, podcast episodes, और हमारा independent podcast show है. So we need your support, we need your love. तो कोई भी organizations के लिए हम podcast नहीं करते या किसी का अंडर काम नहीं कर रहे. This is very independent and very
independent and raw. मतलब 3 लोग, very organic, conversations are very organic. So do follow our podcast. और हमारा podcast जो Spotify में भी है, Amazon Music में भी है और Apple में भी है, और अलग से हम लिंक्स भी शेयर करते हैं Buzzsprout. So do check out these episodes in every try to check out in every platform our episodes, and you never get bored. I would like to thank Nalini ji आपको और सौरभ आपको for again a brilliant participation. But most of all, I would really like to thank our listeners for having joined us once again to listen to this episode of ours. डबल रोल के ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ है. डबल रोल के अंदर इतनी सारी फिल्में हैं, लेकिन टाइम जो है वो लिमिटेड है और हम सब टाइम की पाबंदी में काम करते हैं. अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको लगता हो कि हमको इसके बारे में और बात करनी चाहिए, तो वी कैन टेक इट फर्दर, वी कैन टेक इट लिटिल मोर डिटेल्ड इफ इट इज नाइस. बट पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने जैसे कहा, मुझे फिल्में डबल रोल देखना भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन डबल रोल के बारे में बात करना भी बहुत अच्छा लगा है. और मुझे इतना अच्छा इंसाइट मिला है दोनों नलिनी जी और सौरभ से. उम्मीद करते हैं कि आपको भी उतना ही पसंद आएगा. और जैसे सौरभ ने कहा है कि आप हमारे पुराने एपिसोड्स भी देखिए, सुनिए और हमको सपोर्ट कीजिए. एंड हम इससे और अच्छे टॉपिक्स लाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको एंगेज करें. और आपके पास अगर कोई अच्छे टॉपिक्स हैं तो प्लीज शेयर विद अस. वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट इट. थैंक यू एंड ओवर टू यू नलिनी जी. Yes, thank you. And so well said, Saurav and Ashuji. And thank you to our beautiful listeners. We are absolutely loving the feedback that we are getting. We are also have now a dedicated set of listeners. We want to send a big shout out to them. And thank you so much. And as we've said in the introduction, and as Saurabh has requested and Ashuji has said, we are an independent podcast. And we are doing this because we love cinema. And we love talking about cinema. And we hope that in the future also we'll be able to engage you. So do support us. Our social media handles are there along with every episode. And there is an email ID that is mentioned where you can write to us. And like Ashuji and Saurabh have said, if there's anything that you wish to hear from us in terms of a topic, if you want to make some suggestions, we would be only too happy to accommodate those. And we hope that in the future, we will be able to engage you. Thank you so much. And good night to all our listeners. Yes, thank you so much.